Hello everyone. Welcome to Virani Digital Marketing Academy. Today we are going to start with a second Canva design video और इस वीडियो में हम विजिटिंग कार्ड किस तरह से डिजाइन करते हैं वो सीखेंगे. हाउ टू डिजाइन अ विजिटिंग कार्ड फॉर योर बिजनेस, योर क्लाइंट्स बिजनेस. नाउ एवरी विजिटिंग कार्ड इज डिफरेंट. तो किस तरह से अलग अलग कार्ड बनाना वो हम सीखेंगे. एंड बिसाइड्स विजिटिंग कार्ड बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, जैसे हाउ टू क्रिएट सोशल मीडिया चैनल्स पोस्ट. इफ यू हैव योर सोशल मीडिया चैनल, हाउ टू क्रिएट पोस्ट फॉर दैट. हाउ टू डू ब्रांडिंग, किस तरह से हम लोग ब्रांडिंग डिजाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर लेटर हेड, मार्क्स, कप एंड मच मोर. But most importantly, today you are going to learn is tricks and hacks. आप कैनवा में एलिमेंट्स यूज करके, एलिमेंट्स का प्रॉपरली यूज करके प्रोफेशनल डिजाइन्स बना सकते हो. लाइक यू कैन सी दिस, ये फोटोशॉप में बनाई हुई है. एंड कैनवा से पहले अभी भी मतलब डिजाइन बनाने के लिए फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. ये कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं और हर कोई इसे सीख नहीं सकता है. इट्स वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एंड इट इज नियरली 6 months to 1 year कोर्स, जिसके 50,000 to 1 लाख तक चार्जेस होते हैं और सॉफ्टवेयर भी बहुत महंगे होते हैं. एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू लर्न दिस, बट कैनवा हैज मेड इट वेरी इजी. तो ये जो फोटोशॉप में बना हुआ है, यू कैन से पीएस फोटोशॉप में ये सेम डिजाइन हम लोग बनाने सीख सकते हैं कैनवा में, यूजिंग द राइट एलिमेंट्स. So stay tuned so that you can learn lots of things. Okay, at the end of the video, I'm sure you will learn how to create professional designs. And if you practice, you can even take clients. But at least आपके business के लिए तो आपको किसी को hire करने की जरूरत नहीं है. Okay, so I'm sure you will learn a lot. You will enjoy a lot. Okay, so stay tuned till the end. And do not forget to like, share, and subscribe my channel. And if you like anything or if you want to learn anything, you can comment and I'll reply you back. Okay, so without further ado, let's begin. So here we are on our home channel of Canva. एंड यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे डिजाइन के ऑप्शन है, बट हम सिर्फ विजिटिंग कार्ड सीख रहे हैं अभी. तो विजिटिंग कार्ड के लिए दो है. एक तो ये सर्च बार में आप जाकर यू कैन टाइप विजिटिंग कार्ड्स. ओके, और या तो फिर आप कस्टम डिजाइन, कस्टम साइज भी आप कर सकते हो. बट ऑलवेज रिमेम्बर, यूनिट्स में ऑलवेज गो विथ इंचेस. पिक्सल, एमएम, सीएमएम कुछ भी मत करना. गो विथ इंचेस, IN. एंड 3.5 बाय 1.2. इसकी विथ 3.5 और हाइट 2. ये याद रखना आप. और इसी को लेकर हम डिजाइन क्रिएट करते हैं. और या तो फिर आप यहाँ से मैंने बताया सर्च बार में आप टाइप करें विजिटिंग कार्ड्स एंड यू कैन चूज एनी वन. ओके, तो यहाँ बहुत सारे हैं एंड वी आर गोइंग टू चूज वन फॉर अस एंड देन वी विल कस्टमाइज, वी विल चेंज द डिजाइन. एंड बहुत सारी हम कस्टमाइजेशन भी सीखेंगे कि किस तरह से पूरे कार्ड को बिगनिंग से हम कस्टमाइज या डिजाइन करें. ओके, सो लेट्स बिगिन हियर. आई विल टेक रैंडमली एनी डिजाइन. हम लोग ये ले लेते हैं and we will customize this template. Okay, so ये जो है वो एक ग्राफिक डिजाइनर का कार्ड है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, हाउ टू मेक चेंजेस. इफ यू हैव योर लोगो, यहाँ से आप निकाल कर आप अपना लोगो डाल दें. मेरे पास फिलहाल ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई लोगो नहीं है, तो आई गो टू एलिमेंट्स एंड आई सर्च फॉर लोगो फॉर ग्राफिक डिजाइन. अब अपना लोगो डिजाइन करें. मैंने सिखाया हुआ है. अगर आपको और भी लोगो सीखना है तो प्लीज लेट मी नो, राइट इन अ कमेंट बॉक्स एंड आई विल टीच यू हाउ टू क्रिएट द लोगो. ओके, सो आई विल गो विथ एनी वन ऑफ दिस. आई विल गो विथ दिस. ओके, सो इफ यू हैव योर लोगो, आप यहाँ पर उसे अपलोड कर दें. ठीक है, इमेजेस में जाकर.
Okay, and then your business name. So your business name, for example, you can take it anything, fine arts. Okay. Now always जो नाम होता है that is always in one line, and हर बिजनेस का लोगो के अलावा लोगो हमारा बिजनेस का लोगो तो होता ही है, but besides that every business has a एक टैगलाइन भी होता है ना. व्हाट इज टैगलाइन? टैगलाइन जो आपके बिजनेस को डिफाइन करती है, आपके काम को डिफाइन करती है. सो फॉर एग्जांपल फाइन आर्ट्स, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का है, तो इसके लिए मैं टैगलाइन लिख सकती हूँ, क्रिएटिव डिजाइन्स फॉर योर बिजनेस. ये मेरा टैगलाइन है. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो फ्री डिलीवरी. तो हियर ऑलवेज रिमेंबर टैगलाइन जो होता है वो हमारे बिजनेस के नाम से उसके फॉन्ट साइज ऑलवेज कम होते हैं, छोटे होते हैं. ठीक है. नाउ इफ आई वांट टू चेंज दी फॉन्ट फ्रॉम हियर, मैंने ये लोगो में सिखाया हुआ है व्हेन वी डिड लोगो डिजाइनिंग का वीडियो. But still, if you want, we will change from here and see. Okay, so we can do it. We can choose a good font for our business. Okay, you can try out anything from here. बहुत सारे options है free में भी, and you can try those options. So if I go with this, ये सारा जो capital है. If I don't want capital, so यहाँ पर uppercase से I will change it to normal. If I want uppercase, सारे, or I just don't want uppercase. Yeah, first letter only capital. So all first letter will be capital. Now creative designs for your business. And if I want to change the size, the color and size, that also you know how to do. और ये जो additional जो space है ना white को मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार ब्लॉक कर देता है. सो आई जस्ट मेक इट स्मॉलर. उसको मैं कम कर देती हूँ. अगर मुझे बोल्ड चाहिए तो वो भी कर सकती हूँ. बट रिमेम्बर, जितने भी फॉन्ट है सबके पास बोल्ड और इटैलिक का या फिर अंडरलाइन का हर एक फॉन्ट में ऑप्शंस नहीं होते हैं. सो इफ देर आर नो ऑप्शंस आपको नहीं दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने अभी ये फॉन्ट लिया है तो यहाँ पर इटैलिक जो है वो एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि इसमें इटैलिक भी है. अगर नहीं है तो इट विल नॉट शो यू. सी, यहाँ पर ये लेने के बाद में ये फॉन्ट कैनवा स्टूडेंट फॉन्ट बोल्ड और इटैलिक इनएक्टिव हो गए. दैट मीन्स इनके पास ये फॉन्ट में बोल्ड और इटैलिक के ऑप्शन नहीं है. सो डू नॉट पैनिक अगर कभी नहीं दिखा तो. रीजन है कि उनके पास ये फॉन्ट में ऑप्शंस नहीं है. So here, and I'll change the color, या text color. यहाँ से जाकर anything I want. And if I want to choose of any of this, तो यहाँ पर plus sign, add a new color, and I'll take this picker color जो dropper है, color dropper, वहां से मैं I can choose any one color. Okay. If see here again, okay, ये change हो रहा है. So we can do that also. And then comes the tagline. Tagline भी सारे upper case है, and I don't want all. I don't want bold also, but each letter I want capital. Now depends on me how I want it. Okay, so if you are working for a client, please आप अपने client को एक बार पूछ ले. डिजाइन करने से पहले उनके पास से पूरा इंफॉर्मेशन ले ले, एंड देन यू स्टार्ट. फिर आपने बना दिया और क्लाइंट बोले मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, आई वांटेड दिस, आई वांटेड दैट, तो आपका जितनी मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगी. सो ऑलवेज डू दैट. ओके. सो यहाँ पर जो नाम है उसमें हमारे पास दो कलर है. सो इफ आई वांट आई कैन मेक इट वन सिंगल कलर आल्सो. हाउ आई मेक, यहाँ पर टेक्स्ट कलर चूज करके आई चूज वन कलर. ओके. कंट्रोल जेड, गो बैक. ओके. सो एनीथिंग आई वांट टू अनडू, कंट्रोल जेड.
So here, if I want, I'll change the name. So anything I can do. Fine. If I want to change the font style, I can go and do that. But always remember, जो आपके लोगो में जो font होगे, वही entire branding में use करना. Do not go and change the font colors and font style everywhere. Please do not do that, क्योंकि जो आपका लोगो होता है, वो आपकी बिजनेस की पहचान होती है. Okay, so you are known by your logo. For example, मैकडोनल्ड. तो हम लोग मैकडोनल्ड का लोगो देखकर ही पहचान जाते हैं कि मैकडोनल्ड का लोगो है. नाइकी का लोगो देखकर हम लोग समझ जाते हैं, अगर नाम नहीं भी लिखा है, वी अंडरस्टैंड कि ये नाइकी का है. तो आपका जो लोगो है वो आपके बिजनेस की पहचान है. सो डू नॉट keep on changing the font style and color. Size is fine, क्योंकि हम लोग लोगो बनाते हैं, उसकी साइज अलग होती है, विजिटिंग कार्ड की साइज अलग होती है, सारे ब्रांडिंग स्टेशनरीज जो करती है सबकी साइज अलग होती है. तो हम जो भी डिजाइनिंग करते हैं, जो भी ब्रांडिंग करते हैं, साइज अलग होती है. इसीलिए हमारे फॉन्ट साइज चेंज हो सकते हैं, बट फॉन्ट स्टाइल एंड कलर प्लीज कीप इट सेम थ्रू आउट योर एंटायर ब्रांडिंग. डू नॉट फॉरगेट दैट. Okay, so again, I don't want this additional space. Okay. Graphic designer, I'm fine with this. Okay, I can write CEO. लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप जो भी आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल एस्टेट हो तो रियल एस्टेट एजेंट एंड ऑल दोस यू कैन राइट. अगर बिजनेस है और अगर यू ओन अ बिजनेस देन यू कैन राइट CEO or anything. Okay, so I'll just go with this. Control Z. And here, ये सब किस तरह से, ये सारे एलिमेंट्स है. सो व्हाट आई डू इज, ओके, ये सारे जितने एलिमेंट्स है, यू सिलेक्ट ऑल एंड ड्रैग. ओके, यहाँ पर एक साथ में, एंड आई शो यू कि अगर ये बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं. ओके, सो गो टू एलिमेंट्स एंड फोन, चूज ग्राफिक्स. फोटोज मत लेना, क्योंकि आइकन्स है और आइकन्स ग्राफिक होते हैं, फोटोज नहीं होते हैं. So I'll go with this and then I'll reduce the size. ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं वहां से आपको ड्रैग करना है. सो इधर यू कैन मेक इट स्मॉल, मिनिमाइज करो, या फिर आप उसको साइज को इंक्रीज कर सकते हो. I'll do this and then I can change the color from here. So you can see this. Okay, and keep all the icon size same. फ्यू आइकन्स जैसे कि ईमेल होते हैं, सो जो कुछ अपने आइकन्स होते हैं जो हॉरिजेंटल होते हैं, कुछ वर्टिकल होते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट ऑलवेज इट शुड बी सेम. देन नेक्स्ट इज, ये जो साइन है वो वेबसाइट की है. सो विद वेबसाइट एंड आई विल गो विद दिस अगेन. I'll make a smaller size. This is width 0.3 and height is 0.3. So this 0.3 same. ओके, एंड मुझे यहाँ पर मार्जिन दिख रहा है, यू कैन सी दैट फाइन लाइन. ओके, वन मोर थिंग वी कैन डू इज डुप्लीकेट, एंड मार्जिन दिख रहा है यहाँ पर. I'll place it here, और इसे I'll search for emails. Okay, and I have this, and again same 0.3 and 0.4 और 0.3. एज आई टोल्ड यू, ये जो है वो हॉरिजेंटल है, इसके लिए हमको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा 0.3, 0.2. सो दैट इज फाइन, डोंट वरी अबाउट दैट.
and then we have map. Address है, so I'll search for the map. I'll go with this. Again, I'll drag and bring it here. ओके, और ये सबको मुझे गोल्डन ही करना है. सो वन मोर वे कि अगर मुझे कलर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आई शो यू वन मोर ट्रिक, एंड दैट इज राइट क्लिक करके कॉपी स्टाइल. ओके, अगेन copy style and only this. Okay, so this is what we can do. Now I'll show you one best way कि अगर आपको लगता है कि आपके ये सारे आइकन्स है या आप जो भी कंटेंट लिखते हैं दैट इज इन प्लेस और नॉट. सो वन इज दिस वे. आपने ड्रैग किया एंड यू कम टू नो कि सी इट इज ऑल इन वन प्लेस. ओके, सो थोड़ा सा अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको ड्रैग करके आई कैन इंक्रीज द साइज. ओके, one more trick I'll show you, but before that, we'll complete this. Okay. So here I'll go with the text and I'll write the phone number 9112345678 910. Okay. I'll place it here. Reduce the size to 5. Make it bold. And then duplicate. मैं इसलिए duplicate कर रही हूँ ताकि मुझे font style बार बार चूज ना करना पड़े. So www.xyz.com. अगर आपके पास वेबसाइट है तो, अदरवाइज इफ यू डू नॉट हैव, लीव इट. ये नहीं ऑप्शन में जाना. देन डुप्लीकेट, एंड मुझे यहाँ पर मार्जिन दिख ही रहा है. सो देर आर नो चांसेस के आगे पीछे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. यू कैन यूज दैट. xyz@gmail.com. okay, again duplicate and xyz block C LBS Smart कुर्ला वेस्ट. क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा है इसीलिए हो रहा है. बट आई कैन सी कि यहाँ पर अलाइन नहीं है हमारे टेक्स्ट. ओके, so this way also I can bring it and align it, and the best way I'll show you is, see, I can see it is aligned now. But मैं यहाँ पर फाइल में जाकर सेटिंग्स. ओके, I'll show you. यहाँ पर फाइल. ओके, फाइल में जाने के बाद when I click it, you can see settings and then show rulers and guide. तो यहाँ पर आपको दिखा देगा क्योंकि हम लोग ने एक्टिव किया था इसलिए नहीं दिखा रहा था. सो शो रूलर्स एंड गाइड, एंड देन यू कैन ड्रैग इट हियर एंड यू कैन सी ये अलाइन है या नहीं है. सो ये नहीं है. सी दिस. ओके, ये थोड़ा सा 1 पॉइंट जितना हमें लेना पड़ेगा. दिस ऑल्सो, एंड नाउ यू कैन सी. ओके, so same way I can drag it here and I can see aligned or not. तो हम लोग ने वहां से मार्जिन देखा था एंड वी केम टू नो के इट वाज नॉट अलाइंड, और हम लोग ने मार्जिन से अलाइन किया. बट अगर आपको मार्जिन में वहां पर क्रिएट करने के वक्त अगर नहीं समझ में आ रहा है, दिस इज द वे यू कैन पुट. फ्रॉम हियर आल्सो वी जस्ट नीड टू ड्रैग एंड सी whether both these things are aligned or not. Okay. So I can see ये जो मेरा टेक्स्ट है ये मुझे यहाँ थोड़ा ऊपर लेना होगा. Same way I can try here
and see, and I can bring it here and I can see. Fine. So I come to know from here that my text is not aligned. तो थोड़ा सा इसमें गैप कम करना है. So here also we will make. थोड़ा सा ये just drag up. ठीक है. So now this is perfectly done. Okay, so this is one trick that you need to know. And here, okay, now so हम लोग ये हम लोग निकाल देते हैं. I don't want all these things. Control Z. Okay, I can resize the logo if I want. Now, if I want to create background, I can do that also. But please try to avoid the backgrounds. हो सके उतना background simple plain रखो. द रीजन बीइंग प्रिंटिंग में आपके कॉस्ट भी बढ़ जाता है. एंड एट टाइम्स हमको डिजाइन करने के वक्त पता नहीं होता है, लेकिन जब हम प्रिंटिंग करने जाते हैं तब पता चलता है कि ये जो हम लोगों ने बैकग्राउंड क्रिएट किया है या बैकग्राउंड में हमने जो कलर दिया हुआ है दैट्स नॉट गोइंग विद द डिजाइन. सो उसकी प्रिंट इतनी क्लियर नहीं आ रही है. सो ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. बट स्टिल आई शो यू. So we'll go to elements and we can choose background. Let me see for spa if I'm getting any background. I can go with graphics also and photos also. So अगर मैं इसे choose कर लेती हूँ and then right click करके set the image as background and you can see it's done. And if I want, I can just reduce the transparency. So वो हमारे डिजाइन या लोगो में कहीं पर भी अच्छा नहीं दिखता है. अगर वो डार्क होता है तो ट्रांसपेरेंसी अगर कम हो तो इट लुक्स गुड. ओके, so I can still reduce the transparency and you can see. You can do that. But try at once कि अगर आपको करना भी है तो आप एक बार प्रिंटिंग में जाकर पेन ड्राइव में देख ले. अगर वो प्रिंट अच्छी आती है you can go ahead, otherwise you just remove it. Okay. So now your graphic design is ready. You saw कि हम लोग ने जब बैकग्राउंड ऐड किए एंड अगर प्रिंट में वो आपको अच्छा लग रहा है so you can go ahead with that. Okay, you can go ahead with the background. अगर प्रिंट में नहीं सही दिख रहा है तो देन यू चेंज. अभी ये जो एलिमेंट है ये किस तरह से क्रिएट होता है. सो वी जस्ट गो टू एलिमेंट एंड वी विल सर्च फॉर शेप. So here I have many shapes. I can choose any one. For example, if I'm choosing this, I'll drag it from here and यहाँ से इसका मैंने साइज रिड्यूस करके I'll make it black. Okay. So you can see this same. So ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूज करके यू कैन क्रिएट द डिजाइंस इन डिफरेंट वे. ओके, एंड अगेन ये जो एक एलिमेंट है अगेन आई गो विद द शेप्स एंड लेट मी चूज नाउ. ओके, द सेम. ओके, हम लोग सिर्फ इसका साइज रिड्यूस कर देंगे यहाँ से एंड यू कैन सी दिस सेम. ओके, इसी के इसके लिए भी विल डू द सेम थिंग. विल टेक दिस, increase the size, and from here we will reduce the width and we'll change the color
to this. इसको थोड़ा सा slant कर देंगे. So you can see this. So this is how we create the elements. So बस हमको सिर्फ ये एलिमेंट्स जानना होता है परफेक्टली कि वो कौन सा एलिमेंट है जो हमें यूज करना है या हम यूज करना चाहते हैं. So once you have a good knowledge of different elements, you can go and create a design. But आपको creative भी बनना होगा. You have to think very creatively. Okay, so this is one design we have done. Okay, and another design, अगर हम यहाँ से फिर से देखें, so this, again you have different elements here. Okay, I'll show you how to do this. So ये पहले यहाँ से again we will go to shape and I will choose the rectangle for this. So if I choose this color and if I make it slant, so this one here we have created. Okay, and then comes this is white और यहाँ पर एक है shape. So that is, I believe this one. Okay, I'll just कौन shape है? See this. थोड़ा सा size reduce कर देंगे and we'll change this color to light gray. So if you see this and this, only what we make यहाँ से थोड़ा सा इसे reduce करेंगे size. So we can choose the elements and as I told you, please do not copy the same design. यूज योर क्रिएटिविटी और आप अपनी डिजाइन बनाए, लेकिन ये कैसे यूज होता है वो मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ. सो यहाँ पर मैं इसे डुप्लीकेट करके यहाँ आई ब्रिंग इट हियर. यू कैन सी दिस. और हम लोग यहाँ से रोटेट कर लें दिस. दिस पार्ट इज हियर. ओके, सो यू कैन सी दिस. And now drag it to this point. And from here also drag. So you can see the same design over here. Okay, so this is how we create the designs using different elements. So here we have same. Now how to create this I have shown you. So I'm sure now आपको यहाँ से किस तरह से different elements use करके और कार्ड हम create कर सकते हैं. If you want to learn more cards, कुछ और डिजाइन में आपको confusion आ रही है, so do let me know and definitely I'll try my best. Okay, I'll try my best to reply or create a video that you are facing a problem और अगर कुछ छोटी सी issue है and if you call me I will definitely guide you on that.
Okay, so here is also one more design. So if I replace and this is so easy. I'm sure आप लोग ये बना सकोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक लास्ट एग्जांपल दिखा देती हूँ एंड आफ्टर दैट यू क्रिएट योर ओन डिजाइन एंड लेट मी नो कि आपने कैसे किया है. सो बैकग्राउंड आई चूज इट व्हाइट. जैसे ये व्हाइट है एंड देन एलिमेंट में जाकर वी विल सर्च फॉर दी शेप. ओके, आई विल गो विद दिस. So I'll drag it here and I'll make it blue. नाउ आपको ये कहाँ से मिलता है? तो यहाँ से जो कलर्स होते हैं सेम डॉक्यूमेंट के कलर यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. ओके, एंड देन फॉर दिस पार्ट अगेन आई विल गो विद द स्क्वायर and till here and down I will choose this and then green. ठीक है, done. You can see here. We'll drag it down. Okay, and then here you have your logo. So we just randomly healthcare logo. Again, I'm repeating. Please, यहाँ से रेडीमेड कुछ भी मत लो. You will not learn anything. So please create your own logo. So I can go in graphic design and I can choose anyone else. Okay. And then you write your business name. So I'll take any of this box or I can go with this ready-made style also. Here I have. So यहाँ पर ungroup करके. So I'll name it as global health care. And as you know कि बिजनेस का जो नाम होता है बिजनेस कार्ड पर वो इतना नहीं होता है. So we'll make it smaller size and I will just drag and remove this extra space. I don't want. And we will change the color to green or blue, anything I want. And if I want to add a tagline, again I'll do that. So I can either choose here or okay, add a text box and I'll write your health partner, anything. Okay. And size will be smaller than this. Okay. So Viola, you're done with this. And this is again a shape. So again, you will go to elements and you will go to shape and graphic में जाके any shape I want I can choose. A circle or square or anything I want I can choose. So I can go with this also. क्योंकि ये भी जो shape है that is not round. So I think this is similar to this something. थोड़ा छोटा करके और भी make it white. Okay. And then elements में जाकर phone. Okay.
and just reduce the size so that it fits in this shape. Okay, and I will just duplicate this. So यहाँ पर मैंने shape लेकर I'll go with this email and I'll choose this, reduce the size. Then again the same thing. Okay, and next we have is our map. Again, I'll reduce the size of this. So what I'll do is, now if I want to see again settings and rulers, but already हमारे पास है यहाँ पर. So I'll see repetition line, yes, fine. And then, okay, and then I can write my content here, जो भी है. Name. So one more we have here. I'm sorry. So yes, we'll do that also. Don't worry. So for here, I'll choose man or woman, whatever in graphic. Okay, let me choose icon. See it. Okay. So then I can again reduce the size and put it here. Okay. So we have all this here. And then we go ahead and create our text. In this green box, so here I will add my text, marketing head. Okay, and I'll just reduce the size and I'll change it to white. I did not like this font style. I can change it. As I told you, throughout your branding, keep this same font. But यहाँ पर जो आप अपना नाम, whatever you is your position, आपको position के लिए अगर थोड़ा एक अलग font लेते हैं, so it is fine. But not throughout your branding. Remember that. And यहाँ पर थोड़ा लेटर में हम लोग spacing देंगे, थोड़ा सा हल्का सा. Okay. I'll bring this here and now just I'll duplicate because I want the same font size and same font style. And then duplicate and I'll write the phone number here 91. Okay. Then again duplicate and here your email ID xyz@gmail.com. I don't want capital all the letters, so I will go with this. See now again ये नहीं हो रहा है उसका रीजन एक सिंपल सा है that maybe this font do not have this option. See here. So then all my fonts will be same. Okay, I will not go change now. So now I will duplicate this. So always देख लेना पहले कोई भी font अगर आप choose कर रहे हो
सर पहले आप देख लेना उसमें कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और कौन से नहीं है, विच यू वांट विच यू डू नॉट वांट. ओके. लाइन 1. वॉट एवर जो भी आपकी पोजीशन है आपको वो लिखना है. एंड थोड़ा सा हम लोग इसकी साइज बढ़ा देंगे. जस्ट ब्रिंग इट डाउन. And then I will duplicate this again and I'll write the address. XYZ block C Kula West. And you need to check whether it is all aligned or not. Please. So here we have created the same card, same visiting card. So this is your creativity. You can go ahead and do anything. Now we will learn how to create the social media post. Okay. So for healthcare or spa, we will do. So I'll delete this and I'll remove this. And for social media post, what I'll do is again I'll go to home क्योंकि उसकी size अलग होती है 1080 into 1080. So here and design is so this one is for the doctor. Again, you know how to change all these elements. ये सारे elements होते हैं. This is the logo, content and rest. All you have elements. How to change these elements, how to make it, you know this. So ये अगर हम shape की बात करते हैं, this one. Okay. You can see this shape. So if I go to elements and if we go to shape, you can see this. Just to 180-degree. And you can drag it here. So see this. Okay. And one more element I'll use, and that is this one. And I'll change this color to blue. Here. Okay. This is also green. So I'll change this to light green, this color. So you can see. So these are all elements, nothing else. This is also an element. And I'll go to graphics this time, not shape. And you can see these elements here. So यहाँ पर मुझे इतने नहीं चाहिए. There's one more option, and that is
जस्ट 3 लाइन का है, तो मैंने यहाँ से लेकर क्रॉप करके एंड आई विल क्रॉप दिस टू 3 लाइन्स. See this? Done. See this. So don't worry, अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन कुछ नहीं है, you can go ahead and do anything. Control Z again. Once again, I'll show you this. ये है एंड यहाँ पर if you see 3 dotted line का है, and if I want same, so I'll just select this and crop. Okay, and from here you can see this guideline. यहाँ से 3 डॉट तक का लाके and then done. Okay, and then the बैकग्राउंड में और एक शेप है यहाँ पर, यू कैन सी सेम. So I will just duplicate this, bring it here, send to the back, and I will change this color to the green, light green. Okay, and थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ से, and this dots we will make white. This will be white. Okay. So these are the elements you can choose and you can design you want. So this. अभी हमको बैक में एक ब्लू कलर दिख रहा है. द रीजन बीइंग, I'll show you. Okay, so here, I'm sorry, this is actually a blue color. Okay, so there's one more of this color. So I will duplicate this. Okay, and I will make it blue color. Send it to the back. थोड़ा यहाँ पर ये जो ग्रीन है ना, इसको हम लोग ड्रैग करेंगे यहाँ पर. And this will be here. So that is the reason you can see that blue यहाँ पर. Okay, and this is then also, I think, some blue color. So बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है. नथिंग टू वरी, ये सब एलिमेंट्स ही है जो इन्होंने लेकर बनाए हैं. लाइट कलर, डार्क कलर. सो इफ आई वांट दिस, आई विल जस्ट डुप्लीकेट दिस और इसको थोड़ा सा मैंने लाइट कलर कर लूंगी. So what I'll do is select from here and see this. Okay. So these are all elements, nothing else. So you can create all this kind of designs you want using just simple way. Okay. Simply using the right elements. Okay. So now I want to ensure that ये दो जो है वो both are in place. So I'll go to file, setting and set the guidelines, and I'll bring the guideline here so I can see this here. I'll put it here. So these both are aligned now. Fine. So this is how we can create all the designs using different elements. And then again, they've used many elements over here. I'm telling you, अगर आप post बना रहे हो, it's fine. You can use these elements, but for printing, do not use so many elements. Okay. See again, there is a gray element over here. So same
I'll just duplicate and I'll make it gray color and I'll send it to the back, right back. Okay, here. And then again I'll go to shapes. And I'll just one more element. You can see this and I'll just increase the size of it. To here. And make it एक में जैसे उसको साइज बड़ा कर दूंगी and I'll just duplicate, make it white and send it to the back. And ये blue का थोड़ा सा साइज reduce कर दूंगी. So I don't want this now margin line. So here I have created this. And then जो भी आपका client है उसका photo या whatever. So doctor and here we have photo. Okay. So I'll select any doctor from here. And remove the background. Now how to remove the background मैंने आपको बताया है. यहाँ से अगर आपके पास फ्री वर्जन अगर आप यूज कर रहे हो कैनवा का तो यू विल नॉट गेट द ऑप्शन ऑफ रिमूविंग द बैकग्राउंड हियर. So remember that and there are many sites where you can remove the background, लेकिन आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी. क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी and the photo or your images will not look good at all. So only one site that will give you the best quality, the same quality of your image, and it will remove the background without compromising the quality of your image, and that is only one, Adobe. Okay, so here Adobe remove background. Okay, so let us choose one image and I'll show you. So let me take this image and see, look at this. So it will not compromise with your image quality. Fine. So I have chosen this. यहाँ पर जो background है इसका वो gray में है. So I have taken blue, but it is gray. So all this design you can see is done by just using the elements, nothing else. And then how to write this, you all know. Okay, so one post design we will take and we will design it. So for example, हम लोग स्पा के लिए कर रहे थे या किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए अगर हमको सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है and if I want to customize it the way it is, so how I'll do. तो यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स. Okay, and let me go with this. Simple. Okay, these are all background elements. So add a page and background में ये leaves है. ठीक है. So इसकी ट्रांसपेरेंसी सी अगर बढ़ा दे तो पता चलेगा ये leaves है. So here I can do anything. As I told you, it's my creativity, but I want to show you how to customize this so that you do not feel कि अरे ये तो कितना difficult है बनाना और हम लोग ये कैसे बनाए. At least 2 या 3 I'll just try to redesign for you. तो यहाँ पर मैंने I'll go to the elements and I'll choose leaves. Okay, if I want graphic or photos, whatever I'll choose. तो मैंने ये ले लिया है and it has a background. So if I want, I can keep the background. If I want, I will remove the back. So
रिप्लेस द बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं. ओके, एंड देन व्हाट वी हैव अ क्रीम हियर. So this is a face cream. So let me search for face cream in elements. तो यहाँ से ये भी चूज कर सकती हूँ, या आई कैन गो विद द फोटोज ऑल्सो एंड आई कैन चूज दिस. So it could be a foundation also, or so I just go with this one and I will duplicate this. ठीक है, इसको डुप्लीकेट करने के बाद में I will change this. Okay, in a different position and send it to the back. So you can see this. Now this we can see the shadow. Now how to create a shadow, I'll teach you that also. ये जो है, this is also one element and that is called wooden background, or you can say wooden table or anything. So this, it is this. You can see this. हम लोग फोटोज लेते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली फोटोज में आपको कलर चेंज करने के ऑप्शन नहीं मिलेंगे. और पिंक कलर, लेट मी चूज समथिंग इन पिंक. नाउ व्हाट हैपेंस इज लाइक, हमको ये सेम क्यों नहीं मिलता है यार, गिव यू द रीजन. एक तो ये हो सकता है कि ये पेड इमेजेस में से लिया हुआ हो, या फिर ये फोटो शूट करके ही ये इमेज लिया है, तो आपको ऐसे इमेजेस नहीं मिलेंगे. अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, सो क्लाइंट विल गिव यू इधर, और यू हैव वन ऑप्शन, 2 3 ऑप्शंस व्हिच आई शो यू. You go to some websites where you get the free images. So I'll just search here for wooden background free images. And here I have lots and lots of options like Pixels, Unsplash, Free Peak, Pixabay. So I can choose any one of this and let me see if I'm getting you. I'll save and I'll upload it. जो मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो जो लोगो डिजाइनिंग का था उसमें मैंने आपको बताया है how to do it. But still, if you do not remember, please watch my video so that you will get to see all the tips and tricks I have one here. One is here. So yes, I have. But as I told you, we are not going to copy. ये तो मैं आपके information के लिए बता रही हूँ. That you think कि ये कहाँ से आया है. So these are all elements. So I can choose any one of this. Yeah, I can go with this also if I want. And I don't want this design. I don't want this also. I just want this much. And I'll increase the size of this. So this is one way, or I can go with this also. So options तो आपको यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे. I'll put it at the back. As I told you, it's not necessary you will get. And ये जो है image, you can see this image here. ये shadow है. So how do we create shadow? Shadow create करने के बहुत सारे ways है. So I click it here. Okay. And then edit करके यहाँ पर मुझे shadow का ऑप्शन मिलता है. So I can create any of this thing. Shadow. Okay. And backdrop shadow लेकर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं of the shadow. और lift, distance, blur amount, curve, any of these shadows. ड्रॉप लेके मैंने यहाँ पर इसका एंगल जैसे चाहिए वैसे आई कैन चेंज. सो यहाँ पर मुझे शेडो
देखो यहाँ पर, can you see this shadow here? Distance. Okay. So yes, यहाँ पर एक light shadow है. Now one more way of creating the shadow is, okay, let us finish this, then I'll show you. तो यहाँ पर ये shadow create हुआ है इसका. ओके. अभी ये यहाँ पर इसलिए दिखता है कि ये इमेज को डुप्लीकेट करके बनाया हुआ है. ना शो यू हाउ टू डू दैट. सो ये रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव. इट्स अ मॉइस्चराइजर. सो आई विल गो टू टेक्स्ट and I will write it here, or I can write the brand name BB cream. Okay, and change the text to black, increase the font size, and if I want I can change my fonts to this, and rest of the text if I want. Keeps your skin hydrated for 10 hours. Okay. Now if I want to add anything, I just duplicate and add. Protects your skin from sun or sun rays. Okay. Whatever. So this is what we can do here. Now creating a shadow. One more way of creating the shadow is, I will duplicate this. Okay. And I'll reduce the frequency. You can see this. And I'll put it here. See this. थोड़ा सा इसको और नीचे लेकर आऊंगी. You can see this. यहाँ पर. And if I want, I can change it to black, or just to show you. If you can see you, ये है आपका प्रोडक्ट. I'll show you. थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाकर, and you can see the shadow. So you can see this. This is how you create shadows. So there are many ways of creating the shadows. And one more way I'll show you is, you just click here, duplicate this image, and flip it to vertical. Okay, मुझे इसका size reduce कर. Do one thing, I'll take another page so that you can see it clearly. This, I'll delete. I'll bring this here. Okay, and I will duplicate and flip it to vertical. Okay, थोड़ा सा इसका size reduce कर देती हूँ मैं, so that you can see it properly. And then and reduce the transparency. So this is actually called reflection shadow. Okay, reflection shadow. So we can create this kind of shadows. Just if you want, we can create this shadow of this, duplicate,
and this. Okay, this is also one kind of shadow ये जो दिख रहा है हमको. One more way I'll show you is go to elements and search for shadow, or you can say and just reduce the size of this and reduce the transparency and place it here. See here, this is a shadow. You can see the shadow here. So yes, there are many ways of creating the shadows and with shadow line, and I will choose any of this and I can create the shadow. Okay, let me take another page. I'll remove this. Okay, this product, I'll bring it here again down. I want to create a shadow for this product. So I'll choose this. Okay, look at this. Yeah, see this. So there you have created a shadow. If I want to reduce size, we can do that also. Only this much I want shadow. So yes, many shadow effects we have here. So this is how we can create shadows in Canva. You can choose any of this. So this, look at this. So let me remove the other shadows and put it here. So this, okay. So your shadow is created. So various ways of creating a shadow. So these are the elements we need to learn. Okay, now sometimes we have very good designs, and if I want to create a background, so I'll go to this and I will search for flowers, or you can say geometrical shape. And for example, I choose this. I will then reduce the transparency of this. So you see, so with any designs, anything you can create, or I can say any backgrounds. And set it, replace the background. And then if I want, I can reduce the transparency. And so if I, this is one more way, and yes, so look at this. So we can create the backgrounds and create as many designs as we want. Now, again, let us go back and look for some good design and create it. So, okay, this. Now here also we have many elements. So, okay, let me delete this. यहाँ पर मेरे पास इतने सारे एलिमेंट्स है, तो ये सारे एलिमेंट्स लेके ही बनाया हुआ है. एक तो आप उसके बाद बैकग्राउंड डाल दो, या फिर आप
So I can say, I will say clouds background or blue sky with clouds background. You can say this, not for that, for this. Okay, let me remove the shadow. And if I want, I can set this as a background. So I have a beautiful background with me. Okay, Control Z, and remove this, set as a background. I can do that. One thing. Second thing is this using this all elements. इस यहाँ पर 4 या 5 elements use किया हुआ है. So one is clouds. Okay. So here we have clouds. Or I can go with this. Or I will remove this and just use this. And I can even reduce the transparency from here. Okay. And then क्योंकि ये sun से related है, then sun rays and any of this I can choose. Or sunlight or sun rays, any of this. That or sunlight. So I'll go with this, which is reduce the transparency. तो नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि एक सिंगल ही बैकग्राउंड यूज करके पूरा इमेज बनता है. सारे एलिमेंट्स यूज करके बैकग्राउंड भी बनता है. सो डोंट रिमेन अंडर द इम्प्रेशन कि आप एक ही बना लोगे एंड देन एंड दैट इज इनफ. So you can do all these things and then the client will give you this image. ये फोटोशूट किया हुआ है. अगर नहीं है तो you can search in elements. So I'll go with this and remove the background. Okay. See this? And this are again all like I told you elements में जाकर आप sun icon choose कर सकते हो and you will get this. See this? So I'll go with this and just reduce the size of. We'll have our logo, powerful UV protection. Let me increase the size so that you can see it. Okay, and then this I'll duplicate, bring it here, and the second है icon, that is protection. So then I'll go to elements and I'll do protection. And there it is. I can use this if I want protection. जो यहाँ पर है वो टिक मार्क का है, but we are not getting here. So if I want the same, okay, then I will go with something like tick mark icon.
and I can put it there. Okay, ये लेके I'll reduce the size and I'll put it here. See this? So we have lots of options here. Just explore, start exploring everything here. And this is drop, water drop. So water drop. And let me see, I can, okay, I'll go with this. Reduce the size. Okay. So this is all dependent on you. What you want to do, this is your creativity. Okay, and this is something a shadow created. तो शेप लेकर हम लोग उसका शेडो भी बना सकते हैं. So I'll go with this shape. तो यहाँ पर I can choose any one, and or I can create a shape also and create a shadow. And you know how to create this shadow? Better I'll go with some shape. Any of this. I'll bring it here. Okay. And then edit करके I will create a shadow for this. Or this. Intensity इसकी कम कर देंगे. Rotation, and I'll send it to the back. And then I will reduce the transparency. Change the wave. Okay, and reduce the transparency. So you can see ये जो है वो एक shape create करके, and it is done. Okay, and look at this. If I increase the transparency, reduce the size of it, so what looks, and if I change it to little bit darker, here you see. So ये सारे जो हमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे क्रिएट किए हुए होते हैं. ठीक है, यहाँ से तो नथिंग यू विल फाइंड हियर जो विदाउट एलिमेंट्स है. So everything has these elements. I was just showing you so that you learn all kinds of elements. Now एक जो डिजाइन है बहुत ब्यूटीफुल है, and we will create the same design. Now if I want कि जूस, ठीक है, फ्रूट जूस होते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं ये वाला. So ये सारे एलिमेंट्स है. So what are these elements? That also we will learn. So one is water bottle, और ये जो है ये दिख रहा है, this is water splash. So you go to elements and search for water splash, and you here have all the splashes. तो ये एक नहीं है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्प्लैशेस. देखो ये एक है, ये दो है, यहाँ तो दो अलग अलग स्प्लैश यूज करके किया हुआ है. You can see this. So you can go ahead and do this too. So one, I'll create this. Okay, and another I want is this. So इसी को मैं duplicate कर भी लूंगी तो, and I'll just flip it. Okay, and then what I can do is
create the element is that is juice bottle, juice bottle, and I can put this here. Okay. So ये जो element है, I'll bring it in front. So you can see this. This also I'll bring it in front. Both I'll bring it to the front, and you can see this. Okay. And here, this is again a background with double color. So we will choose a gradient background. Background. So if I want, I will choose any one and then I can go ahead and change the color. So if I'm choosing this, I'll go with this. Gradient. And out of two colors, one I'll choose C. Now here we have option of choosing. So थोड़ा सा इसे ऊपर लेके जाके I want both these colors. Okay. So gradient. This I will choose this color. Okay. And this gray one I'll choose this color. Okay. So yes, I have both the colors with me. So anything in gradient, I can go and do that. थोड़ा सा इसको मैं I'll make it a little darker. So yes, I've got this perfect one. See this? And then we have here the orange slices. So I will choose orange slice. Now let me go with photos because I want original. I don't want this kind. So I can choose any one I want from here. I'll go with this and remove the background. Okay. Reduce the size. So these are all elements that are created, and again I will duplicate this and I'll put this here and reduce the size. Yes, this also I'll reduce the size. So you can see whatever you see in the ads are all elements. I'll repeat it, elements, all elements, nothing else. Okay, and again I will duplicate this. I'll bring it here and make it a very small size as you can see it here. Fine. So all these elements we have here. Now I'm going to show you a real one and उसको कैसे बनाएंगे ये Photoshop में बनाए हुए. As I told you, these courses are very costly and Photoshop में जो डिजाइन बनाए exact हम Canva में वो डिजाइन कैसे बनाएंगे. So here
I have creative ads and I have here one, this. Can you see this? Photoshop में बनाया हुआ PSS Photoshop. ये सेम अगर हमको Canva में बनाना है, so we can do that too. I'll delete this, add a new page and I'll delete this also. ठीक है? Now here we have this. तो उसके लिए हम लोग सर्च करेंगे islands with grass and you will find same here. So I can choose other also if I want. Floating island. Okay. So I've got this. Floating island with green grass. So I have this image. I have this image. तो यहाँ पर अगर मुझे यही चाहिए, for example, see, for example, if this is round and this is what, so if I want same, यहाँ पर भी round है, but I will just give an example. अगर मुझे यहाँ पर ही चाहिए, so I will just bring it here, align to the back. Okay, and I can create this. You can see this. So I can change this also, but I don't want that. Okay, I'm happy with this. And then, okay, so this is one. Then we have juice bottle here. So I'll choose orange juice bottle, orange juice bottle. Okay. And I can choose any one. I'll go with photos. Again, I want the real one. So I can choose this or this. So I'll go with this and remove the background. You have your without backgrounds, many images, and I'll just put it here. Okay, and then comes is my juice, glass juice. I'll just increase the size of this. I can choose just this glass. Place it here. Let me reduce the size of this glass. Place it here, and if I want, I will just type the orange slice. You can choose any slice I want. Just remove the background. Okay, flip it, reduce the size, and I can put it here. Or I will just flip it. And I will put this here. So that's my creativity. I can do anything I want. Now comes is the clouds, white clouds. Okay, and I'll search for white clouds, white clouds in elements. Okay.
I'll go with this and just send it to the back. These are so white clouds. I think this looks better than this. So I'll create this and send it to the back. So I have your different clouds and you can create this. Just send it to the back. Okay, why I cannot see because the background is white. We'll change the background first. Let me change. So this is green and bit of orange. So what I'll do is green and orange background. Okay, so any of this, or I can just choose the gradient background and so I'll go with this. It plays as a background and then I will change the background color. So I will change my background color from here. I don't want this color and make this green. Okay, this green and this is fine. Okay, and I'll go with this way. Okay, so here we have, but this is still darker green. Now I'll go with a dark green one. So I can choose any style I want. This is this style here. If I want, I can choose the same style. And then we have here birds and orange. So because I've taken two bottles here, if there is one bottle, if I want, I can make it one if I want this way. Okay, always we will not have this option in all the images, but I kept two because I wanted to. So I can do this also. Now it all depends on what are my requirements and what I want. But as I told you, do not imitate. This is for your, do not imitate. This is for your information. So that's your creativity. You can go ahead and do anything you want. Again, I'll take this and let me flip this and again send it to the back. Okay, and then we have tiny birds there. So I'll just create tiny birds, tiny black birds. And let me go to graphic and see here, I have this birds. Put it here. You can see here birds. Here also you can see some few birds. Again, few birds here. And I've put a few birds here. And we have the sky here. Well, fine. Now what we have here more is the shadow and orange slice and leaves. So here again orange slice photos and go with this. And then leaves, orange fruit leaves or anything. I'll go with leaves.
So let me go with this, remove the background, and I'll send it to the back. That's fine. If I want to bring in front also, I can bring. Yes, that is all your creativity. If I want, I will just increase the size of this, and you can see. सेम यहाँ पर भी हम क्रिएट कर सकते हैं जो फोटोशॉप में इतने महंगे कोर्स सीखते हैं. आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप ये कोर्स मत करो. आई हैव लर्न दिस एंड रियली आई एम डूइंग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड Corel Draw बेस्ट ऑफ द कोर्सेज. एंड इसमें जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट हमको नहीं मिल सकता है कैनवा में. थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन 70% यस वी कैन डू इट, but not 100%. 100% मैंने सीखा है and I'm working on all these softwares. I'm not working. I do work on Canva, but ज्यादा मेरा जो काम होता है वो Photoshop पे होता है. मेरे स्टाफ जो है they use Canva and they have been creating excellent post on Canva. Okay, but here I have shown you कि आपकी creativity use करके आप एक फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ओके, ये पेड नहीं है, फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. इसको यूज करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो. ठीक है, यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन डिजाइन. अपने बिजनेस का कर सकते हो, आप क्लाइंट भी ले सकते हो. यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ डिजाइन फॉर द क्लाइंट. Okay, now what remained one thing is a shadow. So I'll just search for the shadows, and I will bring that shadow here. Okay, this is the shadow, and you can see here. If I want, I can reduce the size of the shadow and bring it over. Okay, so I will just reduce the size of this. See this. ओके, तो सेम जो हम फोटोशॉप में बनाते हैं ऑलमोस्ट हम सेम यहाँ पर बना सकते हैं. वी कैन डू ऑल दिस डिजाइन. अगर आपको और कोई डिजाइन में प्रॉब्लम आ रही है, डू लेट मी नो एंड आई शो यू हाउ टू क्रिएट मोर डिजाइन. I will make more videos on this and I will teach you more and more elements, more designs, and next time we will create new designs and beautiful designs here. Okay, so do take care. Bye, and do not forget to practice. Practice, 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 because practice leads us towards perfection. So practice and do let me know आप कितने लोगों ने practice किया है and कितने लोगों ने यहाँ से सीखा है. Take care. Bye.